रेगुलेशन 33 कर रहे हैं, 33 किया हमने, 33(2) पढ़ो। The approval and authentication of the financial results shall be done by a listed entity in the following manner. Quarterly financial results submitted shall be approved by the board of directors, provided that while placing the financial results before the board of directors, the chief executive officer and chief financial officer of the listed entity shall certify that the financial results do not contain any false or misleading statement of figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading. ये क्या कह रहा है? अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन जो रिजल्ट्स हम सबमिट करते हैं वो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले बोल रहा है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो बोर्ड अप्रूव करे। ओके, ठीक है, जब रिजल्ट बोर्ड के सामने रखे जाएंगे तो कंपनी का जो सीईओ एंड सीएफओ है वो सर्टिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल रिजल्ट में जो कुछ भी लिखा है वो फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं है और कोई भी मटेरियल फैक्ट को ओमिट नहीं कर रहा। ओके, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो जो पे आएंगे उसके बेस पे ही अप्रूवल करेंगे। हाँ, दे शुड बी एश्योर्ड कि जो उनके सामने आया है वो मिसलीडिंग नहीं है। तो इसलिए जब भी रिजल्ट बोर्ड के सामने रखे जाएंगे, सीईओ सीएफओ का एक लेटर रहेगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट में कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है, कुछ भी ओमिट नहीं किया हुआ। ठीक है। The financial results submitted to the stock exchange shall be signed by the chairperson or managing director or a whole-time director, or in the absence of all of them, it shall be signed by any other director of the listed entity who is duly authorized by the board of directors to sign the financial results. तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है, जो एक्सचेंज को सबमिट करना है, तो साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन साइन करेगा, एमडी साइन करेगा या होल टाइम डायरेक्टर साइन करेगा। अगर कोई भी नहीं है तीनों में से, तीनों छुट्टी पे, तो साइन पे एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी जो कि बोर्ड से ऑथराइज हो। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का चेयरपर्सन या फिर एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर साइन कर। अगर ये साइन नहीं कर रहे तो आप किसी और डायरेक्टर का साइन कर सकते हो, लेकिन उसको बोर्ड ने ऑथराइज किया होना चाहिए और ऐसा नोट रिजल्ट में भी आना चाहिए। ठीक है। The limited review report shall be placed before the board of directors at its meeting, which approves the financial result before being submitted to the stock exchange. जो रिजल्ट लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट हमने देखा कि क्वार्टरली बेसिस में लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट लगती है, तो ये रिपोर्ट भी उस बोर्ड के सामने रखनी है जिसमें रिजल्ट अप्रूव है एक्सचेंज को भेजने से पहले। ठीक है। Annual audited financial results shall be approved by the board of directors of the listed entity and shall be signed in the manner specified in clause B of sub regulation 2. तो इवन अगर एनुअल भी है तो भी सेम मैनर में बोर्ड अप्रूव करेगा और उसमें लिखा है चेयरपर्सन, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर और उनके एब्सेंस में एनी अदर डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। सब रेगुलेशन 3 तो समराइज कर दे पहले रेगुलेशन 2 को समराइज। Sub-regulation 2 talks about approval and authenticating the financial results. The results should be approved and authentic. Quarterly results should be approved by the board of directors. And while these financial results are placed before the board, the CEO or CFO must certify that the financial results are not false, no misleading figures or any material fact is not omitted, and there are no misleading statements. These financial results have to be signed by chairperson, MD or WTD. If all three of them are absent, then it has to be signed by a director who is authorized by the board to sign financial results. Limited review report, which is issued on quarterly basis, has to be placed before the board of directors. And annual audited financial statements also will be approved by the board of directors in the same way in which the quarterly results are approved. That is, they're signed by chairperson, MD or WTD, or in their absence, any director authorized by the board. ठीक है, तो समरी में क्या हो गया? बोर्ड अप्रूव करेगा, सीईओ सीएफओ का सर्टिफिकेट करेगा, ये साइन होगा चेयरपर्सन, एमडी या WTD के थ्रू। अगर वो लोग नहीं है तो कोई अदर डायरेक्टर जो ऑथराइज्ड से लिमिटेड रिपोर्ट आपको बोर्ड के सामने प्लेस करनी है और एनुअल अकाउंट भी ऐसे ही अप्रूव होंगे। ठीक है। सब रेगुलेशन 3
listed entity shall submit the financial results in the following manner. The listed entity shall submit quarterly and year-to-date standalone financial results to the stock exchange within 45 days of end of each quarter other than the last quarter. Next point, in case a listed entity has subsidiary, हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि जो quarterly results है, quarterly and year to date standalone results है, other than the results for the last quarter, मतलब March, except for results for the March quarter, results for first 3 quarters have to be submitted within 45 days from the end of their respective quarter. तो अभी मुझे बताओ कि जून क्वार्टर के कब तक देने? 14th August तक. सितंबर क्वार्टर? जुलाई, सितंबर, अक्टूबर ना, नवंबर, 14 नवंबर तक. दिसंबर क्वार्टर? दिसंबर, जन, फेब, मार्च, दिसंबर, हाँ, फेब 14 फेब तक. ठीक है, तो ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको सबमिट करना है, उस दिन या उससे पहले. हाँ, हाँ. Point number B, in case a listed entity has subsidiaries, in addition to the requirement of clause A of subregulation 3, listed entity should also submit quarterly, year-to-date consolidated financial results. कोई कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट कंपलसरी है सबमिट करना है. ठीक है. इन एडिशन टू स्टैंड लोन, तो उसको 2 रिजल्ट सबमिट करने हैं, स्टैंड लोन भी सबमिट करना है और कंसोल भी सबमिट करना है. ठीक है. The quarterly and year-to-date financial results may be either audited or unaudited, subject to the following. In case listed entity opts to submit unaudited financial results, they shall be subject to limited review by the statutory auditors of the listed entity and shall be accompanied by the limited review report. Provided that कि आपको ऑप्शन, आप चारों के चारों क्वार्टर जो है वो ऑडिटेड भी दे सकते हो या फर्स्ट 3 क्वार्टर आप अनऑडिटेड दे सकते हो. अगर आप अनऑडिटेड देना चाहते हो तो आपको लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट लगाना कंपलसरी है. ओके. और वो कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा. और वो हमने पीछे देखा है, मस्ट बी पीयर रिव्यू. यस, मस्ट हैव अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट. और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अदर देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर चार्टर्ड ही होता है ना? प्रैक्टिसिंग सी, जबकि अदर कंपनीज के केस में कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही देनी है रिपोर्ट. अच्छा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो रहती है उसमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट दे सकते हैं. ओके. और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाकी सब कंपनियां अदर देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है. In case listed entity opts to submit audited financial results, they shall be accompanied by the audit report. अगर audited है तो proper audit report has to be furnished by a statutory auditor. ठीक है. The listed entity shall submit annual audited standalone financial results for the financial year within 60 days from the end of the financial year, along with audit report and statement on impact of audit qualifications applicable only for audit report with modified opinion. तो इसमें एनुअल ऑडिट देखा 45 डेज है. एनुअल के केस में बोल रहा है कि आपको एनुअल रिजल्ट देने, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन देनी है अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है. वो कब देनी है? 60 डेज में. तो मार्च के 60 डेज कब होंगे? मार्च, अप्रैल, मई 30th के 29 नहीं, एक मार्च, अप्रैल 30 डेज. हाँ, 29, सॉरी. कैसे 29? एक मिनट. अगर मैं मार्च अभी 30 का है, अप्रैल 30 डेज और मई के 31 का है. मई के 30 डेज ना, तो 30th में होगा. 29.
हाँ, May 30th. ठीक है, within 60 days. ठीक है. Provided that if listed entity are subsidiaries, it shall, while submitting annual audited standalone financial results, also submit annual consolidated financial results along with audit report and statement on impact of audit qualifications applicable only for audit report with modified opinion. ठीक है, तो अभी सेम जो आपने स्टैंडअलोन के लिए दिया, सेम रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ऑडिट रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, तो 6 डॉक्यूमेंट हो गए. सर इसके फॉर्मेट्स रहते हैं ना, मतलब और स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन के भी. ठीक है, फॉर्मेट है. Provided further that in case of audit reports with unmodified opinions, listed entity shall furnish a declaration to that effect to the stock exchanges while publishing the annual audited financial results. अभी रिजल्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन है या नहीं है. अगर नहीं है तो खाली रिजल्ट, रिपोर्ट और एक डिक्लेरेशन. और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो रिजल्ट, रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. ठीक है. The listed entity shall also submit the audited or limited reviewed financial results in respect of the last quarter, along with the results of the entire financial year, with a note stating that the figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures up to the third quarter of the current financial year. अभी कैसा है, आपके 3 क्वार्टर तो लिमिटेड रिव्यू हुए. हाँ. और चौथा क्वार्टर जो है, पूरा ईयर जो है वो ऑडिटेड था. बराबर. तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट है, टोटल ईयर में से 9 मंथ माइनस करोगे तो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे. हाँ. और वो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट रहेंगे. तो ऐसा आपको नीचे लिखना है कि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है वो पूरे साल के ऑडिटेड रिजल्ट माइनस 9 मंथ के लिमिटेड रिव्यू का बैलेंस है. अच्छा, तो ये एग्जैक्टली ऐसा नोट आना चाहिए रिजल्ट्स में. बिकॉज़ कोई क्वार्टरली का आपका ऑडिट करेगा नहीं. 3 क्वार्टर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट में चल रहे थे और पूरे साल में ऑडिट हुआ. तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए जो लास्ट क्वार्टर है वो बैलेंसिंग. ठीक है. फिर the listed entity shall also submit as part of its standalone or consolidated financial results for the half year by way of a note, a statement of assets and liabilities as at the end of the half year. अभी क्या बोल रहा है कि हर हाफ ईयर हुआ सितंबर और मार्च. सितंबर और मार्च में स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट का सिंगल पेजर है, वो भी आपको सबमिट करना है. ओके. तो साल में 2 बार आपको रिजल्ट सबमिट करना है. साल में 2 बार आपको रिजल्ट प्लस स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी सबमिट करना है. Point number G. The listed entity shall also submit as part of its standalone and consolidated financial results for the half year by way of note, statement of cash flows for the half year. ठीक है. अब 6 मंथली आपको कैश फ्लो भी देना है. हाँ. और statement of assets and liabilities. Listed entity shall ensure that for the purposes of quarterly consolidated financial results, at least 80% of each of the consolidated revenue, assets, and profits respectively shall have been subject to audit, or in case of unaudited results, subject to limited review. ठीक है. जब आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट दे रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि 80% जो रिजल्ट है वो या ऑडिट हुआ हो या लिमिटेड हुआ हो. तो दैट मींस अगर आप सब्सिडियरी हैं, उनके रिजल्ट जो आप कर रहे हो उनका लिमिटेड या ऑडिट हुआ हो एटलीस्ट 80% का. Okay. The listed entity shall disclose in the results for the last quarter in the financial year by way of a note the aggregate effect of material adjustments made in the results of that quarter which pertain to earlier periods. कि कोई भी आपने मटेरियल एडजस्टमेंट किया पिछले पीरियड की, तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में आपको उसको दिखाना चाहिए. अच्छा.
तो ये नहीं समझी, मतलब aggregate effect of material adjustment made in the results of that quarter which pertain to earlier period, मतलब जो पहले adjustments किया है वो इस quarter में बता का impact आपको इसमें लेना है. Okay, ठीक है. The applicable formats of financial results and statement on impact of audit qualifications or audit reports with modified opinion shall be in the manner as specified by the board. रिजल्ट जिस फॉर्मेट में देते हैं वो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है. सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है. ठीक है, प्रिस्क्राइब उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेड्यूल 3 से लिंक कर दिया. हाँ, जो शेड्यूल 3 का फ्रंट पेज विदाउट नोट्स है आप उस फॉर्मेट में दो. ठीक है. और आगे के कॉलम डिफाइन कर दिए 6 कॉलम के बेस पे. ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ईयर टू डेट, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर. तो ये इसका सेबी का सर एक सर्कुलर भी निकला था ना इसके लिए फॉर इक्विटी. सर्कुलर है. ठीक है, तो वो एक बार देख लेंगे. समराइज कर दो 3-4 को. So 3 is, एक मिनट, 3 मैंने बोल दिया ना. नहीं, हाँ. So 3 says कि financial results for the first. समरी में बोलो, पढ़ के मत बोलो, समरी में बोलो कि क्वार्टरली रिजल्ट 45 डेज. हाँ, अगर सब्सिडी है तो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देने हैं. यस. फिर रिजल्ट ऑडिटेड या अनऑडिटेड हो सकते हैं. अगर आप अनऑडिटेड लिमिटेड व्यू रिपोर्ट के साथ देना है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर पब्लिक सेक्टर टेकिंग में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड. अगर ऑडिटेड दे रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट लगाना कंपलसरी है. फिर जब एनुअल अकाउंट्स है तो आपको 60 डेज में देना है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट लगानी है, स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन लगाना है. अगर सब्सिडरी है सेम टू सेम कंसोलिडेटेड भी करना है. हाँ. अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो एक डिक्लेरेशन देनी है आपको कि हमारे अनमोडिफाइड है. अनमोडिफाइड है. एंड और एक नोट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड कि रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर आर द बैलेंसिंग फिगर्स. जो है फुल ईयर और 9 मंथ का बैलेंसिंग फिगर है. यस. फिर हाफ ईयरली में आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज कैश फ्लोज है. फिर जब आप कंसोलिडेटेड है तो एटलीस्ट 80% जो है वो लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट हुआ होना चाहिए. हाँ. और any material adjustments must be reflected. तो आपको डिस्क्लोज करना है. फॉर्मेट आपको सेबी का यूज करना है. क्वार्टर जो है अब ये जो नॉर्मल क्वार्टर लिस्टेड कैंटिटी के लिए और एसएमई में जो है उनको हाफ ईयरली है क्योंकि उनको क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देना पड़ता. अच्छा, हाफ ईयरली रिजल्ट्स. तो उनको ईयर टू डेट नहीं चाहिए, उनको हाफ ईयरली सितंबर और मार्च के देने. ठीक है. 6 omit, 7 omit, 8. The statutory audit of a listed entity shall undertake a limited review of the audit of all the entities, companies whose accounts are to be consolidated with the listed entity as per AS 21 in accordance with guidelines issued by the board on this matter. तो अभी ये क्या कह रहा है कि जब कंसोलिडेटेड देते हो तो जो ऑडिटर है मेन जिन कंपनियों के कंसोलिडेट उनके ऑडिट रिपोर्ट का लिमिटेड रिव्यू करेगा. अच्छा, मतलब जो भी सब्सिडीज हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स का रिव्यू करेगा. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया, समरी में अगर रेगुलेशन 33 करो तो एक बार ऊपर से नीचे पूरा रिव्यू मार दो. फाइनेंशियल रिजल्ट्स अक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं. यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है. या तो आप AS 25 या इंड AS अगर आप एप्लीकेबल है तो वो फॉलो करना चाहिए एज पर सेक्शन 133. फिर गैप के हिसाब से योर स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड. IFRS is an addition but gap has to always be considered. Then any limited review audit review report has to be given only by a statutory auditor who has a valid peer review certificate. Mandatory items are to be included in financial results are disclosed in Part A of Schedule 4. Then process of approving and authenticated results have to be placed before the board, certified by CEO, CFO that they are not misleading and not false. Fair signing has to be done by MD, chairperson, MD or WTD. If all three of them are absent, then an authorized director of the board. Limited review result report is placed before the board and has to be approved, and
financial results have to be approved. Then comes the part of submission to the stock exchange. So for the first 3 quarters, other than the March quarter, they have to be submitted within 45 days from the end of that quarter. And in case of any subsidiaries also, the consolidated results have to be submitted. Any quarterly results of all the 4 quarters may be either audited or unaudited. So if it's unaudited, limited review report must be there. For public sector undertakings, this limited review report is given by a practicing CA. If audited results are there, it have to be accompanied, the audit report should be there. Then in case of the March quarter, these results have to be submitted within 60 days from the end of the quarter. Results can be of 2 kinds, either with modified opinion or with unmodified opinion. If they are with modified opinion, then the financial results along with the auditor's report and statement of impact of audit qualifications. With unmodified opinion, the financial results, audit report and declaration of unmodified opinion. Then for subsidiaries also, both standalone and consolidated financial results must be submitted. There must be a note disclosed that the figures for the March quarter, the balance between 9 months and the figures of the last 3 quarters. In case of 12 months. 9 months and 12 months. In case of half-yearly results, statement of assets and liabilities and cash flow statement also has to be prepared. If there are quarterly consolidated results, then 80% of the revenue, assets and profits which have been consolidated have to be subject to audit or limited review. Any material adjustments in the earlier periods must also be reflected in these annual results. SEBI has prescribed formats for publishing financial results and statement on impact of audit qualifications in case there's a modified opinion. Any company which is listed on SME exchange has to file half-yearly results, and the quarterly applicability for filing quarterly results is not applicable to such SME companies. Then in case of any consolidated accounts, statutory auditor of the holding company has to undertake a limited review of the entities whose accounts are consolidated. That means those of the subsidiary companies. ठीक है, ये समरी थी. अभी हम लोग XBRL भरेंगे. इसका अभी यूनिलीवर के जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किए थे, उसी को ही हम XBRL में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. इसमें एक्सट्रैक्ट ऑल ये रही इसकी यूटिलिटी. पूरा पढ़ लो एक बार क्या कर रहा है. ये यूटिलिटी आप लिस्टिंग सेंटर में जाके डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड करने के बाद ये एक्सेल खुल रही है जिसका पहला पेज में इंडेक्स है. एक बार इसमें सब पढ़ लो क्या कह रहा है, क्या ध्यान रखना. Overview. The Excel utility can be used for creating the XBRL XML file for e-filing of financial results. XBRL filing consists of 2 processes. Firstly, generation of XBRL XML file and upload of generated XBRL XML file to BSE listing center website. 2 चीजें बोल रहे हैं कि ये यूटिलिटी से आप XML फाइल जनरेट कर सकते हो, फिर आपको जनरेट होने के बाद लिस्टिंग सेंटर में जाके अपलोड करना है. Before you begin, version of Microsoft Excel in your system should be Microsoft Office Excel 2007 and above. The system should have a file compression software to unzip Excel utility file. Make sure that you have downloaded the latest Excel utility from BSC website to your local system. Make sure that you have downloaded the Chrome browser to view report generated from Excel utility. Please enable the macros if disabled as per instructions given in manual so that all the functionalities of Excel utility works fine. Please first go through. ये बोल रहा है पहले 2007 एंड अबव एक्सेल होनी चाहिए. आपके पास अनजिप फैसिलिटी होनी चाहिए. लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करने का हमेशा क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए. मैक्रो अनेबल.
फिर index, details of general information about company, financial results by companies other than banks, quarterly, statement of assets and liabilities, format of reporting of segment-wise revenue, result and capital employed along with quarterly results, other comprehensive income. ठीक है, 5 शीट है इसमें. हाँ. Import XBRL file. Now you can import and view previously generated XBRL files by clicking Import XBRL button on General Information sheet. पूरा डाटा नहीं भरना, पिछले बार के XBRL जनरेट डाउनलोड करके आप चेंजेस कर सकते हैं. Steps for filing of financial results. Fill up the data. Navigate to each field of every section in the sheet to provide applicable data in correct format. Formats will get reflected while filling data. Use paste special command to paste data from other sheet. Then validating sheets. Click on the validate button to ensure that the sheet has been properly filled and also data has been furnished in proper format. If there are some errors on the sheet, Excel utility will prompt you about the same. You basically data filling on validating. Validating all sheets. Click on home button and then click on validate all sheet button to ensure that all sheets have been properly filled and validated successfully. If there are some errors on the sheet, Excel utility will prompt you about the same and stop validation at the same time. After correction, once again follow the same procedure to validate all sheets. मतलब अगर कोई error निकली तो वो validate नहीं होने देगा sheet. Excel utility will not allow you to generate XBRL XML until you rectify all errors. Generate XML. Excel utility will not allow you to generate XBRL XML unless successful validation of all sheet is completed. Now click on Generate XML to generate XBRL XML file. Save the XBRL XML file in your desired folder in local system. Generate report. So एक बार once errors are clear, then only validation of the sheet can take place and XBRL file can be generated. Generate report. Excel utility will allow you to generate report. Now click on Generate report to generate HTML report. Save the report file in your desired folder in local system. To view HTML report, open Chrome web browser. To print report in PDF format, click on Print button and save as PDF. Upload XML file to BSc Listing Center. For uploading the XBRL XML file generated through utility, log into BSc Listing Center and upload generated XML file. On upload screen, provide the required information, browse to select XML file and submit the XML. तो मतलब तो सब कुछ होने के बाद अगर आपकी सारी शीट्स वैलिडेट हो गई, you can generate XML file and generate the report. पर जब when you जो अपलोड होगा BSc के वेबसाइट पे वो सिर्फ XML फाइल है. ठीक है, एक बार ऊपर से नीचे में फटाफट समरी कर देता हूँ. समरी में यही कहा कि first have to download the utility from the 5 नंबर. अच्छा 5 ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं, डाटा भरो, अगर पेस्ट करना है स्पेशल कमांड यूज करो, वैलिडेट करो, कोई है तो उसको करेक्ट करो, सब हो जाएगा तो वैलिडेट ऑल एरर करो. हाँ, उसके बाद XML जनरेट करो, जनरेट रिपोर्ट XML फाइल को अपलोड करो. Fill up the data in Excel utility. Cells with red fonts indicate mandatory fields. If mandatory field is left empty, utility will not allow you to proceed further for generating XML. Not allowed to enter data in the gray cells. If fields are not applicable to your company, then leave it blank. Do not insert 0 until it is mandatory field. Data provided must be in correct format. Otherwise, utility will not allow you to proceed further for generating XML. Select data from drop-down list wherever applicable. Adding notes, click on Add Notes button to add notes. तो मतलब इसमें ये यही कह रहा है at the time of filling the data कि सारी जो red fonts है वो mandatory fields है. Mandatory fields have to be filled. नहीं तो XML generate नहीं होगा. कोई भी gray cell है तो उसमें you are not allowed to enter any data.
at no place 0 has to be inserted unless the field is mandatory. And data must be provided correctly. So for example, in the proper format, अगर date का format है तो DD, YY और MM format होना चाहिए. जहाँ कहीं पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होगी तो उसको सिलेक्ट करना है. अगर फर्दर नोट्स कुछ ऐड करने हो देन ऐड नोट्स का ऑप्शन है बटन एंड यू कैन ऐड एनी अदर एडिशनल नोट्स. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, रेड फॉन्ट मैंडेटरी है. अगर मैंडेटरी खाली किया तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी. ग्रे सेल में आप कुछ भर नहीं सकते. अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, 0 मत डालो अनलेस मैंडेटरी हो. सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा ही है. हाँ, जैसे शेयर होल्डिंग. जब तक गलतियां निकलेंगी नहीं तब तक एक्सएमएल जनरेट नहीं होगा. जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको यूज करो, जहाँ ऐड नोट्स है उसको यूज करो. यहाँ पे एंड करते हैं, 5 मिनट बाद वापस करते हैं और एक्सबेरल भरते हैं. ठीक. तो अभी 4:45, 55 पे आ जाओ.